You can start the program. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And a very good evening to all of you. On behalf of Jamaat Islami in Women's Wing, I, Hina Farhan, welcome all my panelist sisters, moderator, and the listeners of the today's webinar. आप सभी का खैर मकदम है. स्वागत है आज के हमारे वेबिनार में और जिसमें एक पैनल डिस्कशन है जिसका टॉपिक है challenges and possibilities of Indian women. So let me start the program by the tilawat Quran Pak. For that, I would like to invite our sister Nida Khazia for tilawat Quran. Sister Nida. Sister Nida Khazia for tilawat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. I seek refuge in Allah from the outcast Shaitan. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. O mankind, fear your guardian Lord, who created you from a single person, created out of it his mate, and from them twain, scattered like seeds, countless men and women. Fear Allah, through whom you demand your mutual rights, and be heedful of the worms that bore you, for Allah ever watches over you. To orphans, restore their property when they reach their age, nor substitute your worthless things for their good ones, and devour not their substance by mixing it up with your own. For this is indeed a great sin.
If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans, marry a woman of your choice, 2 or 3 or 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one, or that which your right hands possess. That will be more suitable to prevent you from doing injustice. And give the women on marriage their dower as an obligation. But if they of their own good pleasure remit any part of it to you, take it and enjoy it with rightful good cheer. Jazakallah khair, sister, for the beautiful Jazakallah. discussion. Now I would like to invite Sajida Falahi, Sister Sajida Falahi, for the welcome address. الحمد لله الذي أنزل القرآن والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ القرآن. मोहतरमा रहमतुन्निसा बाजी, नेशनल सेक्रेटरी JIH Women's Wing, मोहतरमा आतिया सिद्दीका बाजी, नेशनल सेक्रेटरी JIH Women's Wing, डॉक्टर ज्योत्सना योगने, अखत सुनीता, डॉक्टर अखत सुनीता, डॉक्टर सेल्वी गणेश, डॉक्टर सितारा अकील, डॉक्टर संध्या शैली, डॉक्टर खान मुबशिरा, and Dr. Samin Afshan, and Nazimati Halqa wa Mimbaran Shura, JIH, and others participants and sisters. Good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज रिपब्लिक डे के मौके से एक इम्पोर्टेंस टॉपिक, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज फॉर इंडियन वीमेन्स पर होने वाले पैनल डिस्कशन के इस प्रोग्राम में हम आप तमाम को वेलकम कहते हैं और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने इस प्रोग्राम की तौफीक दी, उसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसको सक्सेसफुल बनाए। आमीन। आइए सिस्टर्स, हम ये देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ख़वातीन को, लेडीज को क्या राइट्स हासिल हैं और क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। यूं तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की खुसूसियत कि हम यहाँ सारे नागरिक बगैर किसी मजहबी और बगैर मिल्ली फ़र्क के एक मुश्तरक शहरियत में मुंसलिक हैं और सब हिंदुस्तानी कवानीन की निगाह में बराबर हैं। जात पात की बिना पर किसी शहरी को, किसी नागरिक को उसकी शहरियत, उसकी नागरिकता से महरूम नहीं किया जा सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजहब बेस पर किसी के खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक इख्तियार करने की परमिशन नहीं देता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खुसूसियत है कि छूत छात भेदभाव को क्राइम करार दिया गया है। हमारे दस्तूर में तमाम तर शहरियों को उनके राइट्स और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं। अगर हुकूक के इस्तेमाल में किसी की तरफ से कोई रुकावट खड़ी की जाए, कोई बाधा डाला जाए, तो हर नागरिक को, हर शहरी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में
अदालती कार्रवाई का हक हासिल है। गोया की कॉन्स्टिट्यूशन में कोशिश की गई है कि हर शहरी डेमोक्रेसी से पूरा फायदा उठा सके और उसको वो तमाम सहूलतें हासिल हों जो उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और उसको एक मुफीद और कारामद शहरी बना सकें। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब के बावजूद एक हिंदुस्तानी औरत परेशान है, खुद को गैर महफूज समझती है, उसकी लाइफ में बेइत्मीनानी है, वो पीड़ित है, तालीम से महरूम है, रैप, जिनसी इस्तेहसाल, हरासा किया जाना, तशद्दुद और दीगर मजालिम की शिकार है और सिचुएशन बेटर नहीं है। अपने डिफेंस के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर हमारी पैनलिस्ट बहनें रोशनी डालेंगी। डियर पैनलिस्ट, हम GIH वीमेंस विंग की तरफ से आप सबके आभारी हैं, आप सबके मशकूर हैं कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और टाइम निकालकर यहाँ पर हाजिर हुई और हमें अपने एक्सपीरियंस से फायदा उठाने का मौका देंगी और हम अपने लिसनर्स बहनें जो टाइम निकालकर यहाँ शरीक हैं उन तमाम के लिए भी थैंकफुल। ईश्वर आप तमाम को खुश रखे और खुशियां अता करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakallah khair, sister. Now for the welcome inaugural address, I would like to invite Sister Rahmatun-Nisa Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the Almighty's peace and blessings be upon all of us. First of all, I would like to thank the Almighty that we are here today. We have joined today. When I was looking at the poster itself, मुझे ऐसा लग रहा था कि this is the idea of the Constitution of India. Different people from different mazahib, from different dressing style, from different parts of the country and speaking different languages. हमारा आज का प्रोग्राम भी ऐसा ही होंगे. Some of us might be speaking in English, some might be speaking in Hindi, or some might be speaking in Urdu and different languages, but put together. I first of all request हमारा audience that you have to bear with and you have to listen until the end of the program. Also, I would like to congratulate the committee for working hard to connect together with different panelists to bring together everyone's expertise from different angles and put together in this evening as a panel discussion on the given topic. As has been hinted in the welcome address, we all celebrate the Constitution of India on 26th January every year, and we call it our Republic Day. Actually, the Constitution, the present Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949, and it became effective on 26th January 1950. After that, we know that a lot of amendments have come, changes have come, but not major changes. At the outset, as we all know, the Constitution assures justice, equality, liberty, and fraternity. One of the best in the world, we can say, one of the best framed constitutions of the world. Though it is not perfect, as we all know, perfection is with the Lord Almighty. Whatever we human beings do, there might be some drawbacks, some kami rahega,
but still humanly possible, excellent or a very, the best constitution we can say, and we can feel proud of it. And it is every one of us, it is our duty to uphold it, to protect it, and to ensure that we live up to it and our rulers rule up to it. So rules and regulations, recommendations, there is no kami with regards to protecting and safeguarding and giving equal rights and equity to women. In paper, everything is there. But at implementation level, are we successful? The country has completed 3/4 of a century after getting independence, and almost 3/4 of starting with our constitution also. The data revealed by National Women's Commission or National Crimes Records Bureau or any other commission within or without, even international agencies, show that women are not safe in our country. Women are not happy in our country. Women suffer a lot in our country, and those equity, equality, fraternity, those good terms which are there in the constitution, good promises which are there in the constitution, our Indian women are yet to achieve even after completing 74 years and even after experiencing with different types of governments and governance. See, it is not yet the data. If we look around in our neighborhood, our public places, our public transports, our public service systems like education, health, we can experience this. There are day-to-day experiences, even within homes. We feel that, we experience that, we see in our day-to-day experience that women are yet to achieve those promises given by the constitution. So through these kind of awareness programs and discussions, what we aim at is to create awareness among people, the common people, as well as those who are at the execution level, those who are at the governing level, those who are handling the justice system. We want to say very loudly, we want to put our voices together and say very loudly that we women in our country demand justice, demand equality, demand fraternity. This is what we want to say. So let us voice together. Let us also take an oath together to safeguard our constitution. So regarding the topic, constitution at 74, we are entering into the 74th year after adopting the constitution. Challenges and there are possibilities. There are many possibilities in the constitution itself for giving women their rights. So what are the possibilities? So I think we have got a very good lineup of panelists, experts. Through their expertise and experience, I'm sure that they will be able to share and tell us how we can achieve this dream of our constitution makers. So I don't want to enter too much into details of that topic. But at the same time, I would like to tell you why Jamaat-e-Islami Hind Women's Wing is organizing this kind of a program. Jamaat-e-Islami Hind is a socio-religious organization which is working in this country for the past 75 years, taking the inspiration from the Holy Quran and the life of Prophet Muhammad, life and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaat-e-Islami Hind aims at justice for everyone, equality for everyone, and it is inclusive of women also, for the upliftment of women in various ways, starting from educating, because that is what the Holy Quran advocates first. Iqra, read.
education is given the first priority by the Holy Quran. So we take that inspiration and we try to educate the masses. We try to educate the community, including the women and girls, and provide opportunities for women and girls to get educated themselves. And we organize awareness programs. We try to empower women in various, through different platforms, through our skill development programs, entrepreneurship programs, and so many other activities. And it is an open book because, as our leaders also envision that their inspiration is from the Holy Quran. We have listened to the verses from the Holy Quran. It is from Surah An-Nisa, that is in the name of women, the starting part of the surah, which asks people to be afraid of their Lord in dealing with each other. When you are dealing with each other, you have to treat justly. Otherwise, you need to be afraid of the Creator, because He is the one who created you equally from an equal substance, from the same substance. You can't have any differentiation, gender different. Of course, there are gender roles, or we can say physically, we are biologically, there are differences. But when it comes to getting the basic needs, to progress and develop one's own intellect, one's own economic status, there is no limit just because you belong to a particular gender. And this is what, following this teachings, Jamaat-e-Islami Hind also works in this area in all aspects, on how to empower women and how to get equal status for women, how to be more and more inclusive of women. Our programs are mostly at grassroots level. You all know that, and we never leave any stone unturned to join hands with all those who work for the betterment of society. It's not just for the betterment of women. It's not, something against the men folk. We work together as a family, as a society, as the citizens of a country, for the betterment of our nation, for the betterment of our society, for the betterment of our communities, to make the voice of the voiceless heard, to make the voice of the oppressed voices heard, to give them platforms, to give them chances to speak out for their own. So this is one of its kind. And nowadays we are also using the possibilities of social media, and we organize once in at least 3 months, and every month also there are programs organized. The Jamaat-e-Islami Hind Women's Wing, and also its girls organization, youth, young girls organization, Girls Islamic Organization, GIO, they also organize many such programs to this end. So I hope this will add one more feather to the crown of all the activities of Jamaat-e-Islami Hind Women's Wing, and let us all work together. And I wish all the best to the panelists, and I think we all can have a wonderful session ahead. May the Almighty bless all of us. Thank you so much. Yes, indeed, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the motivational words. Now we are coming forward, and actually we are on time also. So let's start our most awaited part of the program, the panel discussion. For the panel discussion, first I would like to introduce all our panelists and the moderator of today's program. So first of all, welcome all of you. Our first panelist is Dr. Jyotsna Ben Yagnik, and she is from Ahmedabad. Sister Jyotsna Ben Yagnik. She is Master's in Law, PhD in Human Rights, former Vice Chancellor, Adams University, Dean, School of Law and Justice, and Director, United School of Law. Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad. She has been teaching law for the last 36 years. Visited about 15 universities as an expert on subjects of law. She is awarded as one of the 10 most influential women in India in the field of higher education. Welcome, ma'am, in our today's panel discussion. Then we have Sister Achyuta Sunita from Hyderabad.
Sister Sunita is an independent researcher and a senior fellow at Avnishi Research Center for Women's Studies, Hyderabad. She is quite active in social work related to women and their rights. Welcome, ma'am. On number 3, we have Sister Selvi Ganesh. Sister Selvi Ganesh is from Tamil Nadu. She has completed her PhD and MPhil in International Law from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, MCom and LLB from Bombay University. Her work experience includes legal advisor to the Embassy of Federal Republic of Germany, 4 years assistant professor at Indian Maritime University, associate professor at Ambo University, Ethiopia, Africa. During her research field trips, she has visited to Geneva, Switzerland, Ethiopia, and Africa. Welcome, ma'am, in our panel discussion. On number 4, we have Dr. Sitara Akhil, and she is from Raipur, Chhattisgarh. She is state president of Akhil Bharatiya Manav Adhikar. Her qualification includes MA, PGDCA, B.Ed, LLB, and PhD. And work experiences like that. Principal, Vivekanand College, Nara. Chairperson, Vivekanand Education Academy School. Till now, she has teaches hundreds of students in school and colleges. Welcome, ma'am. Now we have Sister Sandhya Shelly, and she is from Bhopal, Madhya Pradesh. She is State Vice President, All India Democratic Women's Association, and presently she is a member of its Central Committee. A postgraduate in physics, Sandhya has been associated with many movements committed to democracy and secularism. She is a social activist and quite active in the field of rights for women. Then we have Sister Rahmatun Nisa, National Secretary, Jamaat-e-Islami in Womens Wing, Chief Editor, Aura e-magazine. She is the founder trustee of Tweet, the Women Education and Empowerment Trust. She has done MA, B.Ed in English Language and Literature. She was principal and vice principal in many schools and colleges in India and Jeddah, including Italian International School. She has written hundreds of articles, stories, dramas, and poems in English and Malayalam language. Welcome once again, ma'am. Then we have Sumaya, Advocate Sumaya Roshan. Advocate Sumaya Roshan, a young graduate from Bangalore. Sumaya is president of National Federation of JIO and member of APCR chapter Karnataka. She completed her LLB and right now she is practicing in Bangalore. Then we have Dr. Khan Mubashara Firdaus, and she is from Maharashtra. Mashallah, she is Alima, MA, B.Ed, PhD in psychology, and then diploma in family counseling. She is writer and editor in Hadia e-magazine, and principal in Iqra, Iqra College of Arts and Science, Aurangabad. Now our moderator of the panel discussion, and she is Sister Samina Afshan. She is from Bangalore. She is editor of Aura e-magazine, president Muslim Mahila Sahitya Sangh, Bangalore. She translated books from Urdu and Malayalam to Kannada and English, and authored a book in Kannada also. So without wasting any time, we should go further. Once again, welcome all of you to our panelists and the moderator. Now I hand over to Sister Samina Afshan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Hina. Good evening, everyone. Esteemed guests of today's panel discussion, and all those who are watching us live this evening. I welcome all of you and invite you to listen, discuss, analyze, and ponder upon a very important topic, the Constitution at 74, Challenges and Possibilities for Indian Women. संविधान का 74 साल और भारतीय महिलाओं के लिए चुनौतियां और संभावनाएं. This is the topic for today's panel discussion.
We all are aware that Indian Constitution provides a vision for the country. The Constitution, through its fundamental rights, legal rights, and other articles, clearly puts forward the liberties and freedom given to the people of India. There is a strong equality in the Constitution, strong gender equality in the Constitution. The Constitution of India made things easier for women in terms of gender equality. The term gender equality itself in the Constitution is mentioned in its preamble, in its fundamental rights, in its fundamental duties and directive principles of state policy also. The Constitution not only guarantees women's empowerment, but also encourages the state to adopt various measures of equality and empowerment in favor of women. Well, when this is what the Constitution of India has to offer, it is equally true that India has always been a gender-sensitive society. And it is indeed a matter of concern also. India's rank in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index of 2020, India's rank is 112th out of the 153 total countries covered. According to the report, India has slipped by 3% in offering equal opportunities to men and women. This gender gap is commonly seen in the fields of education, health, economy, labor force participation, politics, and so on and so forth. Pertaining to education of girls, for example, even after over 10 years of the implementation of RTE, the Right of Education Act, its status report says that 40% of girls in the age group of 15 to 18 are not attending school in India. The retention level of girls at elementary level, according to the report, is 70%, somewhere around 70%, which drops to 55.5% at the secondary level. Only 1 in 3 girls in India completes school education age appropriately. In spite of the fact that the Constitution of India has a number of articles that help curb the challenges that Indian women face and ensures them of several possibilities for their growth, to progress, flourish, join the mainstream, and contribute towards the development of the country, the women in India face inequality, injustice, discrimination, etc. on a daily basis. We all see that. So our panelists today will now shed light on the topic, the Constitution at 74, possibilities for Indian women. The format will be in this way. Each of our panelists, each of our expert panelists will take 5 minutes to share their views regarding the topic, to share their views on the topic. First 5 minutes a round will go. And there will be 2 more rounds of discussion and questions with our speakers. That will take 2 to 3 minutes each for that. Each speaker, each panelist will take 2 to 3 minutes for that. So all those who are watching us live, if you have any questions to our panelists, I invite you to put your questions on the YouTube chat and it will be asked to the panelists. So let us now start without any delay. We'll listen to our learned panelists. I invite as the first speaker for today's panel discussion, Dr. Jyotsna Ben Yagnik. Ma'am, yes, you are invited to share it. I hope I am audible. Yes, you are. Salam alaikum, dua sabko, or good evening to Salvi and other friends. Very delighted to join this very good platform. I can see that many of you are very well known in your respective fields, and I am very delighted to be part of this nice conference with a very lovely subject. As has been told by dear Samina, I am supposed to take 5 minutes and I will religiously take 5 minutes only, except if someone has a question. So point number 1 which I wanted to say is that under Article 325, for the first time, voting rights were given. And that's not the only situation of our country. In many of the colonial countries, this was the position. So first is that for the first time, we have been recognized that we too are citizen, women too are citizen, and they are entitled to vote. So right of vote, being very valuable, very precious right, was granted. It does not stop there.
we have been also granted right under Article 14, 19, 21, and so on and so forth. In preamble also, we have been ensured about the social justice, political justice, and many things. But the hard reality in our day-to-day life, do we get these rights? In most of the cases, the answer is no, except to the women who belong to some very sophisticated, very elite, very aristocratic background. And what for we have assembled is to talk about an average woman. An average Indian woman has not been granted this right for the several reasons. The first among it, we ourselves don't consider ourselves an equivalent citizen. And that is because of the social mindset. We need to change this societal mindset and resultant mindset of Indian women. I know many of the women because when I was also conducting family matters, we have seen the woman saying कि कभी कभी मारता तो हम खा लेते लेकिन हर रोज करता है, कभी कभी दारू पीता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैडम ये तो हर रोज करता है. क्यों कभी कभी करता है, क्यों हम उसको एक्सेप्ट करते हैं? बिकॉज राइट फ्रॉम आवर बर्थ वी हैव बीन इंजेक्टेड दिस फिलोसॉफी एंड इट इज सो मच इनबाइब्ड इन अस कि हमें लगता है कि इतना करना हमारी संस्कारिता है. अगर इससे कम करेंगे तो वी विल बी क्रिटिसाइज, our parent will be defamed in the society. The parent teaches to our children what? To girls' children, don't you go late night out. Therefore, what is happening? When a rape trial was conducted by me, the arguments were being put forward that because she came late night out, she was raped. Because she wore a particular kind of dresses, she was raped. So the justification of the rape was her fault. Now, this is coming from where? Law has given equality, but it is coming from the mindset of our society. So, we all will have to unitedly make an attempt to see to it that our mindset change as a whole. And the third point, before the 5 minutes complete, we have, as a country, we have signed in CEDAW, that is Convention of Elimination of Discrimination Against Women. And that signing of the CEDAW has given us many laws like Domestic Violence Act, like Sexual Harassment at the Workplace Act, like PCPNDT Act, like amendment in MTP Act, and everything of it is generating from the constitutional values and spirit. But have we really lived within our life? The answer is no, because most of the complaints about sexual harassment at the workplace does not come at all. And mistakenly, if some woman does that courage, unfortunately, those who are in the committee will decide it in such a way that no other woman will ever dare to complain against her male counterpart. With this background, I wanted to tell you that there are miles to go before we sleep, and there are many more joint struggles we all will have to undergo. Last sentence, think of the Mahila bill. It's waiting for long. And also see the mockery of Mahila Sarpanch at the Panchayat Raj. Just one OTT platform, there is one serial called Panchayat. Similar thing has been shown in that woman is Panchayat because it's woman's seat. But entire ruling was done by the husband. So we have to stop this collectively, jointly. We have to make our women very bold to face this kind of inequalities, this kind of gender injustice, gender equality. With this, I am thankful to the organization to having invited me. I really had enjoyed sharing my views
if anyone has any question, I would more than happy to answer that. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Jyotsnaben Yagnik. We will have another round of questions. After all the panelists share their views, we will definitely have a round of questions. Now I invite Dr. Selvi Ganesh to share her views with us. Thank you so much, wonderful ladies. Hope you hear me. Is it clear? It is clear. Yeah, thank you so much for inviting me. It is such an honor and privilege. I just want to tell you about the Constitution. The Constitution gives us two main rights to us, two main aspects. One is it prohibits discrimination on the basis of sex. Then it provides for affirmative action for the enhancement of her rights. So that culminated into a reservation of 33.33% for women in panchayat and municipality and things like that. As Dr. Jyotsna Yagnik said, in reality, we are not finding this in our lives. Why? It is there in our constitution. It is there in our legal rights, whether it is labor laws, whether it is, there are several laws relating to women. It is all there. And why? Why it is not practiced? We have a constitution, but we lack constitutionalism. In UK, they don't have a written constitution, but they have constitutionalism. They practice the spirit of the constitution. Friedrich Karl von Savigny, Madam Yagnik would know, because it's a legal jurist. He defines law as Volksgeist. Volksgeist means the spirit of people. Volks means people, Geist means the spirit. He says law is a product of the general consciousness of the people and the manifestation of their spirit. The tradition, habits, practice, and beliefs of the people. Why this constitution is not working for us is because it is not in our general consciousness that men and women are equal. So that is the main problem in this. I want to bring about, as Madam Yagnik was talking about, we common women, it is not available. It is available for the elite women. But I want to bring your attention to women who are not even common. They were nowhere close to common. I want to bring three such categories of women. One is women in conflict zones. Second, the women migratory laborers. And third, widows. These three, they don't even come in our common women. At least we are common women, we are here talking. But none of these women I mentioned, the categories of women I mentioned, they don't even know that they have a right. They don't even know that there is something called constitution. They don't even know that they can exercise their rights. Now, as ma'am mentioned about the CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. This particular act, there is a recommendation number 30. It talks about women in the zone of armed conflict. But India, this is a piece of international law by the United Nations. India gave its report saying that Indian government does not recognize armed conflicts in India at all. But we know in Kashmir, when their special status was withdrawn, how much conflict was happening, it was reported. As on today, it is not reported. That does not mean that such conflict does not exist. It does exist. It is not reported. It is there.
And women in conflict zone are molested, they are raped, they go through, untold miseries. That is not been recognized. It is not only there, it is there in northeastern sisters also suffer in the border areas. That is also a conflicting zones. That is not a point of discussion at all. There we have this Armed Forces Special Powers Act is in place. No one can complain against any of these armed forces personnel if they go and rape any woman, molest any woman, harass any woman. You cannot even take an action against them. You can't even file a case against them. So this is the condition of the women in the conflict zone. Then coming to the migratory laborer women. Here, mostly this happens in the tribal areas. What they do is they go with a truck, haul people, I mean women and children, and they take them to some place wherever there is work. Maybe it is an agricultural field where they have to cut sugar canes, or they have to go to a construction spot, and then they are brought back after the work is over. They are not even paid. Whether they are paid or not paid, we do not know. We know this place Goa. That is a place when we think of, it's a very tourist place. People go there. This the government of central government is there in place, and we have there's a Christian community, there's a Hindu community. All these things that we know, but we do not know. It is at the Western Ghat. Western Ghats is filled with tribal people, and one of my wonderful little sister who is voicing for the tribal exploitation of women and children out there. As they come and take, they molest them, they rape them, they don't even have voice. And this advocate sister of mine, she is working there in that area voicing for them. And coming to widows. Widows are, I'm a widow myself, it takes a widow to understand another widow. This widows are languishing in this Brindavan, Varanasi for many years. There's no voice for them. There's nobody talks. They can't even come out, as if they don't have, they are not even humans. The moment they lose their husband, they lose everything. They lose their identity. They are just sent there and they have to remain there for 20 years, 30 years till they die. They have no rights whatsoever. So this is what I want to bring to fore, like what these women who is below our we common women, right? Thank you for this opportunity that I could, bring, voice for this voiceless women. Thank you for the organizers. Thank you. Thank you, Dr. Selvi Ganesh. It was really enlightening with so many new things to learn. I next invite Ms. Sandhya Shelly to voice her views about the subject. Yeah. आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? जी सुनाई दे रही है। ओके, थैंक यू। तो ये जो विषय आज रखा गया है चर्चा का, मुझे लगता है मेरी हिंदी समझ में आ जाएगी लोगों को। वो बहुत ही अच्छा है और मैं जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो विषय है ये रखा है। और मैं मेरे पहले के जो जितने भी वक्ता हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आज भारत की जो महिलाएं हैं उनके सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं संविधान के परिप्रेक्ष्य में, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रखी कि आज संविधान या जो कानून है वो रखा तो है, कागज में तो है, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये हम और आप सब देख रहे हैं। मैं जिस संगठन से जुड़ी हूँ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, उस संगठन में बहुत ही गरीब तबके की महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, शहरों में घरेलू कामगार महिलाएं हैं, या होम बेस्ड वर्कर्स हैं ये महिलाएं, या मनरेगा में जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो है, और जिन माइग्रेंट लेबर का जो उल्लेख किया अभी हमारी बहन ने वो भी है। हमारा जो संगठन है उसका जो मुख्य नारा है वो है जनवाद, समानता, नारी मुक्ति।
यानी जब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब तक समानता नहीं रहेगी, तब तक नारी की मुक्ति नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है और उसी पे हम आज बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा इतिहास पे जाना चाहिए कि ये जो संविधान है हमारा, वो हमारे देश की महिलाओं को उन्होंने अवसर क्या दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं चुनौतियों की, लेकिन एक तरफ हम ये देखें कि कम से कम वो अधिकार है तो सही हमारे पास, उनके लिए हम लड़ तो सकते हैं। यानी जो आजाद हुआ देश 1947 में, उसके साथ ही साथ और भी देश बहुत आजाद हुए थे, जो हमारी सिल्वी ने भी बताया कि बहुत सारे देश आजाद हुए थे, लेकिन वहां की महिलाओं को या वहां के लोगों को वो अधिकार नहीं मिले जो हमारे देश की महिलाओं को मिले। जैसे हमारे देश में का जो संविधान है, जो लिखित संविधान है, वो सबसे जो उसकी शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग, यानी बिना किसी धर्म की, बिना किसी भाषा की, बिना किसी क्षेत्र की या लैंगिक असमानता के, वो ये कहता है कि हम भारत के लोग, जो भी रहता है यहाँ पे, जो आजादी के समय इस देश का नागरिक था, वो सारे इस देश के नागरिक हैं। ये वो संविधान हमको गारंटी देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है, एक तो संविधान ने जो हमको अवसर दिए, इस देश की महिलाओं को अवसर दिए, वो हमें देखना है कि हमें क्या अवसर दिए। इसके लिए हमको थोड़ा सा, अगर हम इतिहास में जाते हैं, ये बिल्कुल सही है जो आज चैलेंजेस है उसकी चर्चा हमारे की, लेकिन जो अवसर दिए हैं उसका अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जो परिणाम था, जो संविधान बना, वो परिणाम था अंततः। वो जो तमाम आंदोलन चल रहे थे देश में, आजादी के आंदोलन, उसका अंतिम पड़ाव हम कह सकते हैं जो संविधान के रूप में हमारे सामने आया। तो ये जो देश के संविधान ने जो अवसर महिलाओं को दिए, उसमें आजादी के आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका थी उसको हमको देखना पड़ेगा। उसमें जो संविधान सभा में महिलाओं का मुखर जो भूमिका थी वो भी देखनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ हम जब संविधान में महिलाओं को दिए हुए अधिकारों की हम बात करते हैं, जब हम अवसर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भूलना नहीं चाहिए, जो वास्तव में इस देश के जो डाउन ट्रॉडन थे उनके नेता थे। उनको एक ब्रांड कर दिया गया है दलितों के नेता, लेकिन हमारा संगठन ये मानता है, जनवादी महिला समिति, कि वो इस देश के तमाम मजदूरों, गरीबों, महिलाओं के नेता थे। विशेष रूप से मैं महिलाओं के नेता इसलिए मैं कहती हूँ कि वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने, जब महिलाओं के अधिकारों की बात संविधान सभा में आई, तो उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल अगर पारित नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यहाँ तक उन्होंने कहा। तो ये देश का संविधान है जिसने तमाम सारी जो है सुविधाएं या तमाम सारे अवसर इस देश के महिलाओं को दिए हैं। एक बात बताइए कि जब अमेरिका जो 1700 में मतलब जिसने आजादी हासिल कर ली थी, वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार कई सालों बाद मिला। ऐसे ही कई देश थे यूरोप के जहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को आजादी के साथ, संविधान बनने के साथ ही वोट देने का अधिकार मिला। समान काम का समान वेतन का अधिकार मिला। उस अमेरिका में जो अपने आप को बहुत प्रगतिशील कहता है, बहुत विकसित कहता है, वहां पर आज भी समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है महिलाओं को। मातृत्व अवकाश का हमको अधिकार मिला, जो अमेरिका में आज भी नहीं है और कई देशों में नहीं है। ये हमारे देश के संविधान ने हमें दिए। बिना किसी लैंगिक भेदभाव के कोई भी काम करने की आजादी दी, और अधिकार हासिल करने के लिए जो है वो आजादी दी, बोलने की आजादी। ये जो आज हम बोल पा रहे हैं, आज ये जो हम काम कर पा रहे हैं अलग अलग संगठनों में, अलग अलग तरीके से, आज जो हम यहाँ पर ये सेमिनार कर रहे हैं, ये भी एक तरह से संविधान ने दी हुई हमको आजादी है, जो हम बोल के और कानूनों में बदलाव कर सकते हैं, नए कानून ला सकते हैं। ये जो है, ये हमको इसलिए भी हमको ये बात नोट करनी चाहिए कि ये वो संविधान है जो बिना किसी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के ऊपर था। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी कि ये जो हमारा समाज है, भारत जिसका नाम है, वहां पर विभिन्न जातीयताएं हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न भाषाभाषी लोग हैं। इस कारण से जो है, अगर हम एक ही भाषा, एक ही धर्म या एक ही क्षेत्र की बात करेंगे तो इस देश की अखंडता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा और उसकी एकता को बनाए रखना मुश्किल होगा। और इसलिए ये उनकी दूरदृष्टि को लेकर हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान हमारे जो पूर्ववर्ती थे उन्होंने दिया।
एक बात मैं यहाँ पे नोट कराना चाहती हूँ कि जो आजादी के आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता, जो सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा था कि चाहे किसी देश में एक ही धर्म के मानने वाले 100% लोग हों, लेकिन फिर भी उस देश का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उस देश का संविधान जो है, कानून भी जो है धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो संविधान है वो ऐसे कई देशों के संविधानों से सबसे बढ़िया है, जो अवसर देता है आम लोगों को। अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो अभी हमारे जो वक्ताओं ने कहा कि अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि हमारी जो लीगेसी, वो भी हमको याद रखना चाहिए। जो लीगेसी हमको सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की दोस्ती ने हमको दी थी, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया था। एक बात है कि इसी संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी। जो सीए एनआरसी के आंदोलन के खिलाफ हम बिल्कुल बेखौफ होकर लड़े, और ये बात सही है कि आज वो ताकतें आज इस देश में राज कर रही हैं जिन्होंने उस वक्त हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। आज वो ताकतें इस देश में राज कर रही हैं जिन्होंने उस वक्त भी जो है तिरंगे झंडे को नहीं माना था, और इसीलिए इसका परिणाम है कि धारा 370 हटाई गई। और 3 तलाक के नाम पे जो है उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को बहुत अधिकार दे रहे हैं, जबकि उन्होंने जो है महिलाओं को परेशान किया एक इस तरह का कानून लाकर। और ये जो है, ये जो तमाम सारे अधिकार हमको मिले थे, बोलने का अधिकार हमको मिला था, उससे हम कई कानून में बदलाव ला सके। जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून में हम बदलाव लाए, दहेज विरोधी कानून में हम संशोधन लाए, बलात्कार विरोधी कानून में हम संशोधन लाए, और उसके अलावा जो है मजदूर महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र पर यौन हिंसा और तमाम सारे दूसरे कानून जो हमारी वक्ताओं ने बताए, पीसीपीएनडीटी कानून वगैरह, ये सब संविधान ने जो हमारे अधिकार दिए थे उसके बारे में उससे लिया। अभी आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ, बलात्कार विरोधी जो है वो उन्होंने पारित नहीं होने दिया है। मतलब महिलाओं को अपने शरीर के ऊपर भी जो है वो अधिकार नहीं है। ये वो विकसित देश के सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हमारे यहाँ पर ये बात सही है कि पंचायतों में क्या हालत होती है। जिस पंचायत वेब सीरीज का उदाहरण दिया वो मैंने भी देखी है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि पंचायतों में, नगर निकायों में, लेकिन फिर भी महिलाओं को अवसर दीजिए। महिलाओं को जब आप अवसर देंगे तो वो दिखाएंगे भी, धीरे धीरे वो बदल भी रही है। क्योंकि आप याद करिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो चर्चिल ने एक बात बोली थी। चर्चिल ने ये कहा था कि इन लोगों से बनेगा नहीं, इन लोगों से राज करते बनेगा नहीं, ये वापस आएंगे। लेकिन हमने दिखाया, नेहरू और तमाम सारे उस वक्त के नेताओं ने दिखाया कि ये देश में जो है हम लोग राज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमको ये देखना चाहिए, ये परेशानियां जो है हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का भाषण भी हमको याद करना चाहिए कि कितना भी अच्छा संविधान किसी भी देश का हो, लेकिन जो बात हमारी अभी साथी ने कही कि संविधान हमारी चेतना में नहीं है, हम सोच में नहीं है। और इसलिए उनका भाषण हमको याद करना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर का, कि कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर वहां की जनता उसे क्रियान्वित करने के लिए सोचती नहीं है उस दिशा में, तो वो संविधान जो है वो पड़ा रहता है। वो बात मैं बिल्कुल उनको ये करती हूँ कि हाँ, बात सही है। तो ये जो चुनौतियां है, वो चुनौतियां आज बहुत बड़ी है। जो आज हमको लड़ना चाहिए था बचे हुए अधिकार हासिल करने के लिए, आज हमको लड़ना पड़ रहा है जो अधिकार है उनको बचाए रखने के लिए। ये हालत हो रहा है। जैसे कि अभी हमको 33% रिजर्वेशन के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन जो है वो आज बलात्कार विरोधी कानून को जो है वो कमजोर करने के लिए काम किया जा रहा है। दहेज के खिलाफ कहा जा रहा है कि ये जो दहेज विरोधी कानून है वो कहा जा रहा है कि ये तो परिवार को तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए उसको भी कमजोर करो। कार्यस्थल पर यौन हिंसा के खिलाफ जो कानून बना है उसमें लड़की को फंसा दिया जाता है। और ये जो चीज है, ये जो नौजवान है, वो नौजवान जो है, हमको धारा 25 और 28 से इस देश में आजादी हमको मिली कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। वो जो धाराएं उनको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और यहाँ पर नौजवानों को अपना जीवन साथी चुनने का हक जो है वो सरकार पूछती है कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं। ये संविधान के ऊपर हो गए हैं ये लोग। तो इसके लिए हमको एक तरीके से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको सारे धर्मों के ऊपर उठ के इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इस संविधान को अगर बचाना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, अलग रखते हुए। और सबसे बड़ी बात, राजनीति को धर्म से अलग करना होगा, तभी हम इस देश के संविधान को और इस देश की एकता को बचा सकते हैं।
जी, मेरा हो गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी बोल सकती हूँ। Yeah, Sister Semina. I think she's facing some. भाई उनको कोई प्रॉब्लम है विचार को गहरा उनके नेट जी Semina Saiba. Yeah, am I audible? Yes, you are. Yeah, okay. मिस संध्या शैली, आपने अपने विचार को गहराई से व्यक्त करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। I would like to now call Dr. A. Sunita to express her views and enlighten us with her thoughts. Ma'am, Dr. A. Sunita. Excuse me, she is not seen online. Maybe you can call the next speaker. By then we will see what happened to her. Maybe some technical problem. I would now like to invite Advocate Sumaya Roshan to speak on the topic. Sumaya Roshan, ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible and clear? Yes, you are. May peace and blessings be upon all of you, to all the fellow panelists and to the organizers. It is indeed a pleasure to be a part of this discussion and be alongside such experienced and prominent speakers. So the topic today, we are discussing about the Constitution and where it stands on women's issues and women's right and women empowerment, right? So it is important to understand that women account for almost 50% of the Indian population. So the full and entire development of the country is not possible if this section of the population is not empowered or their rights are not duly given. And we also understand that women belong to a class or a section that is in a disadvantaged position, right? Because of the several social and cultural barriers or impediments they carry. So when we talk about women's empowerment, it's important that we empower them on social, political, and economic spheres, because we have been time and again told, and we keep hearing that to awaken the society or to awaken the people, it is important that the women are awakened. So definitely in this aspect, the legislation plays a very important role. Like in the inaugural address, Mr. Sahiba mentioned about the essence of the constitution through the preamble, the four important terms that are mentioned, right? But also, if you see in the constitution, I believe there is twofold approach taken towards women empowerment. One aims at guaranteeing the right of the women or removing all kind of discrimination that is happening against them. And the second is to empower the state to make special provisions for women or for children or other weaker sections, so that they can be brought in the same footing as the others in the society. Because when we talk about Article 14, that is a right to equality, equality before law, and equal protection for law, we need to understand that everyone cannot be treated alike, but because everyone has different social statuses in the society, different economic statuses. So equals will be treated alike and unequals will be treated alike, so that through these special provisions that are given to these weaker sections or the disadvantaged sections, they can be brought into the same footing as the others. So it is important that justice and equity or fairness is kept in mind, right? So this is what is also mentioned when we talk about equality. So this is not just blindly mentioning that all are equal and all should be treated equally, but also keeping in mind fairness and justice. So also Article 15 talks about prohibiting discrimination
discrimination against uh, because of sex or gender, and empowering the state to make positive discrimination to favor women so that they can be uplifted, their social condition can be uplifted, and we can provide them political, economic, and social justice. But the most critical component of women's empowerment is education, right? So through education only we can ensure that um, uh, they are provided political, economic, and social justice. When we come to education, we see that there are rights that are given in the constitution that ensure that women or the minorities or the weaker sections are given education. For example, the earlier we had Article 45 or Article 46, which talked about compulsory and free education, and Article 46 talked about um, promoting the educational and the economic interests of the weaker section. But through the efforts and through the activism on part of the Indian judiciary, we see that Article 21A was introduced after 86th Amendment, and education was made the fundamental right for the age between 6 to 14. Um, so Due to this education becoming the fundamental right, again, the RTE was also enacted, the right to free and compulsory education in 2009, and then it came into effect in 2010. But like the previous speaker was also mentioning, that there is a serious gap between the rights that are there and how they are implemented in the society, right? So definitely there are rights in the constitution and through the other statutes and legislations that are there. But women have to also, go through a lot of challenges and face obstacles to access education. And I am specifically pointing out education here because I feel that education is the key to all kinds of empowerment, not just for women, but for all individuals, right? So in the recent years, we have seen that the access to education of women there have been a lot of challenges for women to access education, starting with the COVID crisis that happened. The reports say that the pandemic hit access to education of students, but the most suffered section were girls. So girls suffered the most during COVID while accessing education. And then we see the recent in Karnataka, the hijab ban that was there, due to which also a lot of students, although they were particularly Muslim students, but they were a section of, they were a part of the weaker section in the society. So during that, we see numbers with saying that 17,000 students were dropped out, or they couldn't access education. They either have a few girls also, whom I know personally, have not just dropped out from education, but they have also started looking for jobs because they don't have any other option, or they don't see any other way out from this. So this is a very serious concern. After that, the very recently, what we saw, the cancellation of scholarships, right? The pre-metric scholarships and the Maulana Azad National Fellowship Scholarship, which were cancelled. That also adds to the struggle or the challenges the girls are facing. Also, although they were minority scholarship, but they do affect girls and women at large. So they also create challenge and increase the obstacles for women to access education, where pre-metric scholarships did not allow students from grade 1 to grade 8 to apply for these scholarships. The Maulana Azad National Fellowship, cancelling of this scholarship again. The women who were pursuing PhD or MPhil faced challenges and faced issues through to access and continue their education. So
where we understand that our constitution has given us so many rights, again there is a gap between the rights and the implementation. And I think this also is because um, firstly the non-implementation of those rights, secondly the gender insensitivity that is prevailing in the society, and the lack of literacy and the lack of awareness of the rights that exist. And if those rights are not given to us, how do we access them? So awareness and legal illiteracy also is very much prevalent. And I believe that to overcome these issues, it is not just important that we as women come forward and voice out our opinions and stand for those other women who are suffering, but also it is important that the men also come forward and support the women in their families or in the society. Moreover, the government and the laws have a very important role to play, so these women can overcome these challenges. Thank you for the time given. Thank you, Advocate Sumaya Roshan, for expressing your views so profoundly. I would now like to ask the question to Dr. Jyotsna Yagnik, because she'll be taking the question now. A question has come from our YouTube viewers. Ma'am, the question is, apart from gender equality, women are facing inequality and brutality due to their religion. Like, for example, Bilkis Banu, the case of Bilkis Banu. While the convicts are walking free and the victims appeal to the highest court pleading justice has been dismissed, how would the Constitution of India ensure safety to the victims of such cases? What is your opinion about it? Jyotsna ma'am. My opinion is that no law alone can help us, which is equally applicable to Constitution of India. Bringing great diamonds or great provisions or great laws will not help us unless the societal mindset is changed. At present, our societal mindset, we must honestly confess, is not up to the mark. Of course, the ray of hope is that slowly and gradually it is changing. But the change is so slow that by the time other people get development, you are hardly moved a step ahead. So no law or constitution can help until we means collectively as a society, because we have this impact of man-oriented society, and the vices of man-oriented society are so ghastly and so, I mean, that haunting of that ghost is continuously there, and we have so far not got rid of it. Of course, we can look forward for a day when we may get rid of it. But when the Western countries has also not got rid of it, it is, I mean, over positivism to think like that. Therefore, we have to be ready like the soldiers are ready to fight at the front. That's what my answer is. And this is the right way this institution has suggested us. We should all frequently meet irrespective of religion, caste, creed, or even sex. Why male also cannot come over here? There are many such male, as has been rightly said by some of the speakers. There are many male who are helping or who are cooperating or who are promoting or who are doing all their best for their respective female family member, maybe sister, daughter, or wife, or as the case may be. So I think we can only keep hope. That's it. Thank you so much. Exactly. It's so true that all of us together should work to safeguard the provisions that the Constitution has given us. Thank you so much, Jyotsna ma'am, for your input and for My your pleasure. answer. Khuda Hafiz to everyone. Goodbye. Take care. God bless you all. In our panel is Dr. Sitara Khan, who is going to express her view regarding the topic. Dr. Sitara, please unmute yourself.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सितारा। सबसे पहले आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जमाते इस्लामी की महिला विंग्स की जो बहनें हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस वैल्यूएबल सेशन के मैं हिस्सा बनी और हम सब साथ हैं। और जितने भी यहाँ पर बातें हो रही हैं बहुत ही खुशगवार है और बहुत ही वैल्यूएबल है। इन बातों की बहुत वैल्यू है और हम सबको इसमें बहुत गहराई से बात करनी चाहिए। बात चल रही है कि भारतीय महिलाओं के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज की। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा भारतीय संविधान बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, विश्व के सभी संविधानों का समावेश है। और हमारे भारतीय संविधान ने हम सबको बहुत सारे राइट्स भी दिए और हमारी बहुत सारी ड्यूटीज भी है। हम बात करते हैं राइट्स की, और यहाँ पर सभी लोग जो बात कर रहे हैं सब में बहुत गंभीरता है उन बातों में। लेकिन इन गंभीर और मोटी मोटी बातों के बीच से जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमको बारीकियों पर भी जाना होगा। हम भारतीय महिलाओं की चैलेंजेस की बात करते हैं, उनकी संभावनाएं क्या है, तो हमको जमीन से उठ के देखना पड़ेगा। तो हमारे आसपास सबसे पहले बहुत सारा कुछ गलत होता है। शुरुआत तो अपने आसपास से होती है, हमको बहुत दूर जाने की जरूरत होती नहीं है। हम अपने आसपास से अगर देखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे गलत होता है, लेकिन कितनी बहनों में वो ताकत होती है, कितनी महिलाओं में वो हिम्मत होती है कि वो बढ़ चढ़ कर आगे आए और उस चीज को सामना कर सके, उसको फेस कर सके या लोगों के सामने ला सके। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो शेयर ही नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी बात बता ही नहीं पाती हैं और आगे तक उसको पहुंचा नहीं पाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमको पहले अपने आप को उतना तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए हमको अपने राइट्स का भी पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या है, हमको क्या अधिकार मिले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने अधिकारों का सही पता ही नहीं होता है। जैसे मैं कह लूं कि अगर वो बताती भी है, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं होगी, वो अपनी बात कह सकती हैं, अपनी समस्याओं को पहुंचा सकती हैं। उसके बावजूद चूंकि लोगों तक वो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता नहीं है, बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि मुझे ये भी राइट है, और वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो वर्चुअल शिकायत कर सकती हैं। तो ये बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, और चूंकि एजुकेशन की भी कमी है। और मेरा बहुत गुड लक है कि मेरी जो पीएचडी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक आंदोलनों के विकास पर मैंने किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये चीज कही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो गुर्राएगा भी और अपनी लड़ाई लड़ भी सकता है। तो पहले हमको तो अपने आप को तैयार करना होगा कि हम अपनी बात कह सकें, अपनी लड़ाई लड़ सकें। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। हम धार्मिक ग्रंथ कुरान की बात करें तो सूरह निशा में आप देखेंगे चैप्टर 4 में भी, हमारे कुरान में भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज आती है कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार हैं, महिलाओं को इज्जत देनी है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं की बात माननी है। हम ऋग्वेदा में चले जाएं, उस टाइम पे भी महिला प्रधान समाज हुआ करता था और महिलाओं को पूरा डिसीजन मेकर हुआ करते थे। बाद में व्यवस्थाएं लचर होती चली गई, उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार हुई। लेकिन मैं जैसे बताना चाहती हूँ कि मेरा जो वर्क प्लेस है वो बच्चियों की शिक्षा पे ही है। तो हमारा जो कॉलेज है, हमने जो स्टार्ट किया है, ऐसी जगह पे हमारा कॉलेज चलता है जहाँ पे आफ्टर 12 बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती थी। उनका एजुकेशन 12 के बाद ब्रेक हो जाता था और वो बच्चियां उसी एजुकेशन के साथ ब्याह दी जाती थी। तो उन बच्चियों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती थी, वो पढ़ी लिखी माँ ही नहीं बन पाती थी। तो ये बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, अल्लाह का, कि मुझे ये मौका मिला। और हमारे कॉलेज जहाँ पे हम विलेज एरिया में वर्क करते हैं,
वहाँ पे लगभग 50 से 60 गांव की बच्चियां आती हैं और वो अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई कर पा रही हैं। तो वो समझ पाती हैं कि एटलीस्ट मेरा राइट क्या है, मुझे कैसे लड़ना है, मुझे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। अगर कुछ गलत हो रहा है अपने आसपास या किसी के साथ हो रहा है तो मुझे उसको कैसे सपोर्ट करना है। तो इन सब चीज के लिए बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन पे जाएं। शिक्षा बहुत जरूरी है। अब तब्दीलियां हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम और आप यहाँ पर बैठकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षा ही वह हथियार है जो तमीज और तहजीब के साथ आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है और आपको अपनी लड़ाई लड़ने का एक तजुर्बा देता है, आगे बढ़ने का। या कि कहीं गलत हो रहा है, लड़ाई का मीन्स ये है कहीं कुछ गलत लगता है तो एटलीस्ट आप कह सकते हो कि ये गलत है। और हमने SC ST एरिया में बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ओपन किया हुआ है, जहाँ पर एजुकेशन का एक पार्ट ही रखा है, गुड टच बैड टच, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता है, बच्चियां जान नहीं पाती हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों के लिए भी अवेयर करना होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम सबको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा, अपनी बात रखने की हिम्मत रखनी होगी और लोगों तक वो जागरूकता फैलाना होगा। तभी हम अपनी सही लड़ाई सही मायने में लड़ पाएंगे। और जो हम चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, अपने संविधान की गरिमा की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान ने तो बहुत गरिमा में हमको अधिकार दिया है और महिलाओं के लिए तो इतने सारे अधिकार हैं। अगर हम सही मायने में वो चीज समझ ले तो कुछ भी बुरा नहीं होगा और हम अपनी बात कह पाएंगे, हम बंदिशों में नहीं बन पाएंगे, हम बुराई को कटाक्ष कर पाएंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है। अपने आसपास जो घरों में घरेलू हिंसा होते हैं, घरों में शब्दों के बाढ़ जो चलाए जाते हैं, हम वहीं से शुरुआत करके तमीज और तहजीब सिखा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि शिक्षा रूपी हथियार हमारे साथ होना चाहिए। और मुझे यहाँ पर जो बुलाया है और मैं इस सेशन का हिस्सा बनी हूँ, पूरा आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब भी ऐसा लगता है तो मैं जरूर ऐसे सेशन का पार्ट बनना चाहूंगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सितारा। आपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पेश किया है। So now we all our panelists have spoken. They have shared their views regarding the topic. We will now go to the question and answer session. The first question I would like to ask Dr. Selvi Ganesh, when she was sharing her views, when she was putting in her thoughts, she was talking about, ma'am, you were talking about women in the zone of armed conflicts and like, you know, special status for Kashmir when it was removed. In that conflict area, the rights of women, they were molested, and also the rights of migrant laborers. All these were discussed. So, aren't there any provisions in Constitution to safeguard the? Is there anything, or are we? Do we have to talk about it? Do we have to push the authorities to do something about it? Yes, sure. Thank you for asking me this question. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, see, the fundamental rights is available for all citizens. You know, one of you have read the fundamental rights, what is there, what are the rights that we have. It's available for all of us. It is there for all of us. Now, what is the difference is, now we have, as we are got educated, we have learned it, and we have come here as a to discuss about all these things. But there are people who are left out. They are just outside. They are beyond the margins. How do we bring them together here? Right. So education, yes. We have to educate them. We have to work together. At some way or the other, we have to work together. And we have to, like, unless we work together, leaving all our differences, religion, caste, creed, and everything, as women, as one force, we have to work together. I know for my wonderful sister, Ruth Manorama, last 30-40 years, she's been fighting
right, voicing for implementation of CEDAW in India. Okay, CEDAW came into, it was signed in, I'll tell you, this was signed in 79. India signed in 1980, but it ratified it only 1993. Any international convention which it requires to be given a enabling legislation in India. Till now, the enabling legislation is not, legislated in India, right? So there has been voice, from Ruth Manoharama and her organization and all that. Last several decades, they have been voicing that there should be enabling legislation. Okay, fine. We have so many legislations, but how is it been implemented? Yes. Okay, now that we are here together, okay, this is an opportunity to resolve, to fight together, voice together, for our rights and our less privileged sisters who are there in Kashmir, who are there in Northeast, who are there in tribal areas, who are there in some widow homes, in old age homes. They are there. We are the hope for them, right? Unless we make voice, unless we come together and give our voice, no, there's no hope for them. And thank you so much for organizing this, bringing us together. I think we will work together, we will move together to do something. There are many other organizations, like I said, Ruth Manoharama and others, we should join hands with them, and the voice will be louder as there are more women to give voice, there will be more louder voices. And this is what that we need to do. And another thing, the UN General Assembly resolution in 1999, which gives a right for women to go directly to international forum. In case her rights have been violated, if she is been discriminated, she can go directly. But that particular one, India has not signed at all. Right? Unless we voice, unless we put pressure on the government, please do it. Okay, you are not, giving, we are not able to come to you. At least we can go directly to international forum. And another thing is, this is also important for us to go, below and teach. They don't even know. At least we know. Even how many of us in this forum know that we can go directly to international forum and and complain? We do not know. So, like, we need to learn. We need to learn together, and we need to teach others, and we have to, come together, and we have to pull others up, who are there down under. We are the hope for them, and God has chosen us to be a hope and light for others. And thank you so much for this question. Thank you so much for inviting me to be part of this session. Thank you for the thank you all. Thank you so much for your input, Doctor. And it's really women don't even approach the national forum, leave alone the international forum. So when there is a problem, the option is there. The option is there. Okay. Right. That is really a very useful information for all of us and all those who are watching out there live. So, Advocate Sumaya Roshan, I would like to ask you, as an advocate, while we definitely have the Constitution as a shield against a lot of wrongs, critics have also said that it does have certain biases, okay, or limitations. Are there places where the Constitution's gaps or silence have been misused by modern legislators, or even in court cases, like the silences and gaps that are there in the Constitution? Am I audible? Yeah. Yes. Yeah, like it was also previously mentioned, right? The Constitution is there, but the Constitution doesn't mean that it does not have any flaws, or it cannot be changed or amended. So which is why we have an option of amending the Constitution also. So if we say that the Constitution, whatever is mentioned, cannot be changed, or it has to be implemented as it is, then there wouldn't have been any question for amendment, to bring in amendments
in the Constitution. Like I mentioned about the 86th Amendment, due to which the education was made and a fundamental right. And previously also someone was mentioning about 33% reservation that also came through amendment of 73rd and 74th Amendment in the Constitution. So definitely there are there are places where we can improve, but again the question is that only if we challenge it, only if we bring that in people's notice, people's view. Like for example, the hijab issue, right? There was a question of whether it is a fundamental right, not a fundamental right. So the discourse happened around whether it is a fundamental right, it should be given to the girls or not. So again, interpretation of the Constitution also is one of the important aspects through which we can tell the societies what the framers of the Constitution intended to do. Right. So without the interpretation or without bringing in such discourses, obviously there will be misuse of the provisions. There will be, misuse of the provisions because of the ignorance of people also. So interpreting the Constitution, going back to the intention of the legislation, of any law for that matter, not just the Constitution, for any law, going back to the intention, like we were mentioning about the essence of the Constitution through the preamble, through the intention of the framers of the Constitution, we understand why such and such law was implemented. For example, the right to life, the ambit of the right to life has been expanded so much through the cases and through a lot of judgments now. So it is not just restricted to life, as in life or death, but it is extended to dignity as well, and to healthcare and to education, etc. So I believe that obviously there is a scope for improvement in anything and everything we do. One thing is that we not just criticizing it, but critiquing it in a way that we can improve it. That should be our intention, so that we as a whole can grow. Thank you so much, Sumaya, on that thought. We as a whole can grow together, and we have to voice our opinions and towards the amendment of so many laws to ensure and safeguard whatever the provision the Constitution has given us. So my next question goes to Ms. Sandhya Shaili. As someone who has been a part of the left movement for a long time, you must be regularly interacting with organized women's groups. Like आपको नियमित रूप से संगठित महिला ऑर्गेनाइजेशन से आपका तालमेल होगा, आपका बातचीत हो रहा होगा. तो क्या भारत के श्रम अधिकार, मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत में श्रम अधिकारों के संबंधित संविधान की सपोर्ट से, संविधान के माध्यम से उसके लिए एक रूप मिला है या नहीं? आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है. सॉरी, मैं जब अपनी बात रख रही थी तब मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कहा था कि जब उन्होंने जो है संविधान सभा में जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों की बात हमारे संविधान में की गई है, ठीक उसी तरीके से जो श्रमिक वर्ग है उसके अधिकारों की भी बात उन्होंने की है. और तमाम सारे जो कानून बनाए गए थे, जिसको श्रम कानून हम कहते हैं, वो अधिकार हमको संविधान ने दिए थे. जैसे हम अपने जो काम करने की आजादी है वो था, जो महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन की जो आजादी है वो था. और अभी मैडम ने कहा कि जिस तरीके से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से संविधान में संशोधन करके हमने तमाम सारे, जैसे कार्य क्षेत्र पर जो यौन हिंसा होती है उसको लेकर हम लोगों ने जो है वो संविधान में संशोधन लाया. ये तमाम सारे कानून बने हैं. यानी संविधान जो है वो श्रमिक वर्ग को कई अधिकार देता है, लेकिन फिर भी जो है हमको अभी भी
काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसके लिए हमको लड़ना होगा। ये अभी कमजोरी है और ये हम देख रहे हैं कि अब जो शासक ताकतें हैं, वो ताकतें जो हमको अधिकार मिले हैं, चाहे वो मजदूरों को मिले हो, चाहे वो किसानों को मिले हो, चाहे महिलाओं को मिले हो, जो अधिकार मिले हैं उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो सवाल इसका है कि अब उनको बचाया कैसे जाए और अधिकार हासिल कैसे किए जाएं। अब यहाँ पर ये सवाल है, जो बिल्किस बानो का जो सवाल उठाया गया था वो बिल्कुल सही उठाया गया था, मैं चूक गया था मेरे से, कि ये देश जो है हमको अधिकार तो देता है, लेकिन चुनौती तो ये है ना कि अब ऐसे लोग बैठ गए हैं, उन्होंने कह दिया कि उनकी जो पकड़े गए हैं उनका आचरण बहुत अच्छा है। अब आप बताइए कि जो सीए एनआरसी में पकड़े गए हैं, जो नौजवान पकड़े गए हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं दिखता है इनको। और ये जो बलात्कारी हैं, जो 3 साल की बच्ची को जिन्होंने पटक के मार डाला, जो बिल्किस बानो और उसके पूरे परिवार के साथ जो दरिंदगी की, उनका आचरण इनको अच्छा लगता है। तो ये जो लूप होल्स हैं हमारे देश में, ये जो लूप होल्स हैं जो शासक वर्ग उठा रहा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारा संविधान कई देशों के संविधान से इसलिए बेहतर है कि ये किसी को भी ऊपर नहीं रखता। जैसे किसी देश में राष्ट्रपति या जो कार्यपालिका है वो सबसे ऊपर है, किसी देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान सबसे ऊपर है। ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि संविधान जो कहता है उसको हमको मानना पड़ेगा, और इस संविधान में संशोधन करके जो है हम अपनी जो हमारी जो जीवन है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो जो हमारी साथी ने कहा कि संविधान हमारे सोच में होना चाहिए, संवैधानिक जो नियम है, जो कानून है, वो हमारी सोच में होना चाहिए। जो वैज्ञानिक सोच फैलाने की बात संविधान करता है वो हमारे सोच में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, उनकी जिंदगी बहुत बदतर हो जाएगी। तो ये हम कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। डॉक्टर सितारा, आपसे ये सवाल है कि when I was giving an introductory talk about the subject, I was telling about the right to education. इसमें ये है कि 40% जो लड़कियां हैं 15 to 18 years के आयु वर्ग के 40% लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। और रिपोर्ट के अनुसार जो प्राथमिक स्तर है उसमें 70.6% रिटेंशन लेवल है। और जब वो माध्यमिक स्तर पर जाता है, व्हेन इट गोज टू द एलिमेंट्री लेवल, 55.5% ही रह जाते हैं। और अंत तक अपने हाई स्कूल एजुकेशन को बहुत सारे लड़कियां कंप्लीट नहीं करते। तो इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या आप इसके एक या दो मुख्य कारण बता सकते हैं कि ऐसे और आप ऐसे अधिनियमों का भी और संशोधन का भी सिफारिश कर सकते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए इस मसले को? जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो राइट टू एजुकेशन का मैटर है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें स्टार्ट तो करती हैं बच्चियां, और स्टार्टिंग में तो बच्चियां स्कूल जाती हैं, और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते उनका रेशो कम होता चला जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि घर का जो माहौल है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, कि बच्चियों को हमको प्रोत्साहित करना है, बच्चियों को आगे बढ़ाना है, और उनको प्रोत्साहित करके एक जागरूकता बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन के लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब हम अवेयर होंगे, घर के पेरेंट, आसपास का माहौल जागरूकता भरा होगा, तो बच्चियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा स्कूल नहीं जाने के पीछे, या उनकी जब जैसे जैसे स्कूल कॉलेज की शिक्षा आगे बढ़ती है तो बच्चियां कहीं ना कहीं या तो उनका आत्मविश्वास कम होता है, या दूसरे परिवेश जब उनके सामने आते हैं तो बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, और बहुत बार बच्चियां उसको फेस नहीं करना चाहती हैं। उनके अंदर एक झिझक होती है कि हम किससे अपनी बात शेयर करें,
कई बार घरों का माहौल भी ऐसा नहीं होता है, तो वो बच्चियां अपनी बात नहीं बता पाती हैं और धीरे धीरे फिर उनका रुझान शिक्षा के प्रति कम होने लगता है और वो उससे कतराने लगती हैं और उसके बाद में उनका ग्राफ कम होता चला जाता है। तो इसके लिए हम सबको मिलके प्रयास करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको शुद्ध करना होगा। बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो निर्मित होती हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी अपनी बात कही थी कि शुरुआत घर से ही होती है और माहौल बच्चियों को और महिलाओं को घर से ही कुछ गलत का अगर आभास हो रहा है तो उसके लिए हम बड़ों का भी फर्ज है, माँ का भी फर्ज है और जो घर के लोग हैं वो अपनी बच्चियों पे नजर रखें। थोड़ा भी अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट अगर कम हो रही है, तो हमको समझना पड़ेगा और जागरूकता ला के हमको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो रेशो कम होता है ये लेवल पे आने लगेगा और इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। एकदम से तो पॉसिबल नहीं है, गलत हो रहा है, इसलिए तो हम सब इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी और घरों से ही करनी पड़ेगी और उन बच्चियों को समझना पड़ेगा, उस माहौल को समझना पड़ेगा। कोई महिला अगर बहुत दुखी नजर आ रही है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उसके लिए भी हमको समझना पड़ेगा, गहराई में जाके जमीन से शुरुआत करनी होगी। मैं यही कहना चाहूंगी। तो घर के अलावा, घर के अतिरिक्त आप ये भी सिफारिश करते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसमें कोई संशोधन हो, ज्यादा संशोधन हो और कोई अमेंडमेंट हो उसमें? जी बिल्कुल होना चाहिए कि हम अगर ऐसी कोई परिस्थितियां जाती हैं, ऐसे कोई केसेस अगर आते हैं तो उसमें उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको ऐसे संभावनाएं दी जाए कि वो आगे बढ़ चढ़ के अपनी बातों को रख सके और कह सके और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो सके। यही कहना Thank you so much, Dr. Sitara, for your thoughts and for all the things that you have mentioned here. We have a few more questions. We'll go for another round of questions. We have a few more questions from our audience, also from our viewers also. So I would once again like to ask Dr. Selvi Ganesh, there is a question for you. Articles that ban forced labor and ensures equal opportunities at workplaces and equal wages, etc. It's apparent that there is a huge difference between the law by itself and implementation of the said law. In your career and research, do you see progress in the implementation of law? Like, well, the constitution, we are talking about the constitution at 74. All these years, did you see progress in the implementation of law, or is it the same? As I said, it is in the spirit of people. There was a time in history where our society was very pro-socialistic, where socialist principles were being implemented. The laws of labor laws were really implemented. They were made sure it is implemented. But today we are going towards labor code. They are going to remove all the 27 labor laws and they're going to come up with 4 labor code. So which would, in fact, I don't know how it's going to come and how much of the rights of the people would be there and how much would be taken away, we do not know. So it is all about the implementation mechanism and the spirit, the person who is holding while implementing that. No, that matters. That matters. So how do we bring about this this spirit in them? As mothers, we have to teach our children. We have our boys. We give birth to our boys. We have to teach our children to have such a spirit of coming out with implementing what is there in the law, be it equality, non-discrimination, educating their girls, educating all these things that we have to it is in our hands that we have to teach our families to bring about that spirit. I hope it answers your question. Or yeah, sure. Yeah, sure. Thank you so much, doctor.
My question to Advocate Sumaya Roshan, you already mentioned about the hijab issue. The viewers have asked this question. Like Article 15.1 and 15.3. Okay, the state shall, this I'm adding from my side. The question I will tell later. The state shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, caste, creed, and gender. That is there. Article 15.3. In this article, nothing will stop the state from making special provisions for women and children. And the question here is the issue of hijab. You spoke about it, and now that the report is out that 50% dip in minority students count in government PU colleges in Karnataka because of the hijab issue. So, what is your take in this issue, like regarding the right to wear hijab and fight? What is the take? Like, what fight should be done to resolve the issue? Because the right to education itself is curbed here. Yeah, so our take on my take as well as my take on behalf of the Girls Islamic Organization was very clear, right? And this was what the students were also appealing for, that they did not have so the issue became between uniform and hijab, uniform versus hijab. But the actual, the core of the problem was access to education, which was getting limited. So that was kind of sidelined. That is because of why we see now that, you know, there is so much decrease in Muslim girls accessing education. So the girls' demand there was quite reasonable. What they were asking was not to remove uniform or anything. They were just asking for an additional permission to wear hijab along with their uniform, right? So I don't think that it was such a big concern that, you know, it should have been cancelled, because we see that in Karnataka, in many colleges before this issue also happened, there have been uniform in a few colleges, and girls have been adhering to the uniform and wearing hijab along with that, with no problem at all from the administration. So this was like a sudden issue that arose, which no one saw it coming, and because of which we saw that it also spread to from one district to the entire state to a few other places. In Kerala, we saw a few incidences, and in some other parts of the country also we saw a few incidents, right? So our take was that both wearing a hijab as a right to religion is also a fundamental right. Education is also fundamental right, and we cannot ask them to choose between the two. So the girls were put in a position that they had to choose between the two fundamental rights that are there, which is absolutely wrong. They have been given both these rights in the constitution, so they should have been allowed to, you know, exercise those rights. So again, now that, you know, there was again the split verdict, again we wait for the response from the Supreme Court, and we hope that, you know, these rights of the girls, these fundamental rights of the girls are restored, and there are proper measures taken to ensure that the girls who had to leave schools and colleges because of this are made to go back to schools and colleges. That will be the major concern, to kind of undo the damage this entire issue has done. You know, yeah, so that's all. Thank you so much, Sumaya. Now we have come to the end of the discussion, the panel discussion. Thank you everyone for all your input, for all your thoughts, for all sharing your views in such a profound manner. We know that the Indian Constitution had made equality a basic right of all the citizens of this country. Ever since the enactment of the Constitution, society and values have evolved, but there are still some flaws. We know that. In the discussion, it came out that there are flaws and we need amendments. Maybe the flaws are due to lack of stringent laws. The same thing came up also in implementing the provisions, giving some people still consider. Imagine some people still consider having a girl child as a burden to the family. The government, the Supreme Court, and other authorities have time and again implemented various measures to prevent discrimination. But still, it did not change much. It did not change because of the shallow thinking of the people who even consider practicing female feticide in this era, in this age. Due to all this,
ensuring possibilities that the Constitution has stated, and mitigating the challenges that the Indian women face still remain a challenge by itself. We will all work together to solve the problems. The main crux of improving gender-based equality lies in changing the mindset and the thinking of the people, as we discussed. Women should be aware and should be made aware also of the laws and policies that are in their favor in the Constitution. I extend my heartfelt gratitude to all our esteemed and expert speakers. Thank you so much, one and all. And over to you, Hina. Mashallah, it was a very fruitful session. Inshallah, we will be able to reap its fruits. I once again thank all my panelists for taking out time of their busy schedule to join us. Thank you, all of you. Now, I would like to call upon Dr. Khan Mubashira for the concluding message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ये हमारे इस पैनल डिस्कशन और इस प्रोग्राम के एमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर जोयसना मैम, डॉक्टर मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा और सिस्टर संध्या शैली साहिबा, सिस्टर सुमैया रोशन और सिस्टर सुनीता साहिबा, डॉक्टर सितारा खान साहिबा और डॉक्टर सलवी गणेश साहिबा और समीना अफशा साहिबा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन. और दीगर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. यहाँ एक बहुत अहम टॉपिक पर हम लोग बहुत देर से डिस्कशन कर रहे थे और ये एक अच्छा मौका है और एक लिटरेट कम्युनिटी की वो पहचान है कि वो जो है अपने इश्यूज पर डिस्कशन करती है और ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेन्स मिलकर जो है हमारे मसाइल पर हम तमाम वुमेन्स जो है हम अपने मसले पर, अपने इश्यूज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं. और न सिर्फ ये कि डिस्कशन कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसका रिव्यू भी है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें क्या के साथ हमारे चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं हमारे लिए, और इंडियन वुमेन डे टू डे लाइफ में कौन से चैलेंजेस को झेल रही है. इस पर बहुत ही मतलब डिटेल स्टडी के साथ मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा ने इसके सारे गाइडलाइंस के साथ हमारे सामने डिस्कस किया है और साथ ही हमारे पैनलिस्ट ने भी बहुत अच्छी तरह से इस पर बात की है. अब जो कि हमारे पास ये चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस पर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले थॉमस रिटोर्स की एक रिसर्च है जिन्होंने 550 लोगों से डेटा कलेक्ट करके इन्होंने जो रिसर्च की है, तो इन्होंने कहा कि इंडियन वुमेन्स जो है कितने टाइप्स के वायलेंस को झेल रही है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे वायलेंस को भी झेल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, डोमेस्टिक वायलेंस है और वायलेंस इन प्लेस वर्क है, वर्क फोर्स लेबर है, फोर्स मैरिज है, सेक्सुअल स्लेवरी है और सेक्सुअल वायलेंस है, साइबर बुलिंग है और साइकोलॉजिकल बॉडी शेमिंग और स्टेटमेंट्स एंड स्लोगन्स. इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज हमारे पास इंडिया के वुमेन झेल रही हैं. अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च ये कहते हैं कि इसमें जो है टॉप 10 जो कंट्रीज है उसमें सबसे टॉप पर इंडिया है और इंडिया जो है मतलब वुमेन सिक्योरिटी में सबसे टॉप पर है कि इसमें वुमेन के इनसिक्योर वुमेन है यहाँ पर. अब ये वुमेन इनसिक्योरिटी की बात जब हम करते हैं तो ये हमारे पास, जैसा कि अभी हमारे पास बात आई है कि सबसे अहम चीज जो हमारे पास है वो ये कि सबके पास रिलीजियस, क्योंकि रिलीजन को फॉलो करता है हमारा समाज और सभी लोग हमारे समाज में हैं और हमारे पास भी सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलीमन रक़ीबा. कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ओ मैन, fear your Lord who created you from a single being and out of it created its mate. And out of the two separate many man and woman, fear Allah in whose name you plead for rights and heed the ties of kindship. Surely Allah is ever watchful over you.
तो अब अगर हम इस पे गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से कई जोड़े बना दिए और उन दोनों से बहुत सारे मर्द दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से हक मांगते हो और रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। जान लो, यकीन रखो, तुम पर अल्लाह निगहबानी कर रहा है। अब अगर सारे सोशल स्टाटा हमारी कम्युनिटी का कि हर एक अपने रिलीजन को भी फॉलो करता है और अपने समाज का स्टाटा जो है वो रिलीजन बेस्ड होता है, हर एक कम्युनिटी अपने रिलीजन पर, और कोई दुनिया की का रिलीजन जो है वो समाज के जो भी केओस पैदा होता है उसको रोकने के लिए कुछ कानून वजह करता है, कुछ कानून बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी हमारे कानून है और ये बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि हमारी बहन हमारी सिस्टर सेल्वी साहबा ने भी कहा कि ये जो इसमें है इसमें बहुत सारे हुकूक हमको दिए गए हैं और हमारे राइट्स हमको दिए हैं। संध्या शैली साहब सिस्टर ने कहा कि बहुत सारे राइट्स हमारे एक्ट ने हमको दिया और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुए, बहुत सारे एक्ट न्यू भी बने हैं। जैसे अगर हम एट ए ग्लांस देखें, डायरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बना है 1967 में, इंडियन डिवोर्स एक्ट बना है 1969 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 में, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है 1976 में, और इंसिडेंट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट जो है 1986 में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है 1990 में। इसी तरह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना है 2006 में और सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट है, प्रोहिबिशन एक्ट है, वो है 2013 में। मतलब ये कि अमेंडमेंट्स हुए हैं, कानून हमारे पास है, लेकिन उस कानून के बावजूद हमारे पास जो मतलब समाज है, उस समाज का में जो चैलेंजेस हमको है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है। मेन चैलेंजेस इसके इम्प्लीमेंटेशन के हैं, मेन चैलेंजेस इसको अप्लाई करने के लिए है कि हम इसको अप्लाई करते हुए समाज कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लॉस जो बनते हैं वो सोशल रिफॉर्म के लिए होते हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म के बावजूद हमारा समाज, हम देख रहे हैं जैसे ही हमारी नजर पड़ती है मोबाइल पर, अभी इस प्रोग्राम के बीच में ही जो मैसेज पॉपअप होता है हमारे मोबाइल पर इन शॉर्ट का कि दो लड़कों ने एक लड़की को, एक 7 साल लड़की को रेप किया और 6 महीने बाद उसका बर्थ हुआ, तब पता चला 6 महीने में उसके बर्थ से जब से वो सेक्सुअल हरास हो रही थी। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखिए रिसेंटली जितने केसेस हमारे पास है, इन नंबर ऑफ केसेस हमारे पास है, अनकाउंटेबल केसेस हमारे सामने है। और आज ये हालत है कि हमारी अपनी बेटी भी, हिंदुस्तान की महिला की, किसी भी महिला की बेटी जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलते हुए उसका दिल डरता है कि ये सेफली घर पर आएगी या नहीं आएगी। बॉम्बे की कंडीशन में एक खातून सुबह सुबह चाय के लिए सामान लाने निकलती है, उसका रेप हो जाता है। दिल्ली के अंदर एक शाम के वक्त में गाड़ी चलाने वाली 2 व्हीलर लड़की को जो कार में बैठे हुए लोग हैं उसका एक्सीडेंट करवाते हैं और उसको खींचते हुए दूर तक ले जाते हैं। ये कंडीशन इंडिया की है और सभी वुमेन जो है इस अहम अवसर पर ये सोचने और ये मतलब इसको चैलेंजेस को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर गलती कहाँ है। तो अगर हम आजादी के पहले से देखिए, जैसा कि मैम ने हमसे कहा, संदेशाली मैम ने कहा कि हमारे पास ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के साथ में भी फातिमा शेख थी। उस जमाने से, यानी कि इंडिया की आजादी से पहले से वुमेन स्ट्रगल कर रही है और पार्ट है वुमेन का इंडिया में, स्पेशली ये हमारी पहचान है कि हम वुमेन भी काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो समाज है, मेल इंटाइटल समाज है, मेल डोमिनेशन समाज है और मेल कंट्रोल समाज है। मेल कंट्रोल डोमिनेशन समाज बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी है कि दुनिया का कौन सा आदमी है जो विदाउट वुमेन पैदा हुआ है, वो वुमेन की गोद से ही पैदा होता है। और वो जो संस्कार लेकर पैदा होता है या हमारा जो माइंडसेट होता है, सबसे बड़ी बाधा अगर इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की है, इक्वल राइट्स में है, जस्टिस में है, तो वो सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी रुकावट है हमारे माइंडसेट, हमारे समाज का, जिसमें माँ अपने गोद में ही बेटी की पैदाइश को अच्छा और बेटी की पैदाइश को बुरा समझती है। और हर एक मजहब में ये बात क्लियर कट है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी गलत ना समझा जाए उसके बावजूद। यानी अगर हम अपनी भी बात करें तो लड़की की पैदाइश को खुशखबरी के तौर पर कहा, और दीगर प्राचीन भारतीय प्राचीन संस्कृति की भी बात करें तो लड़की की पैदाइश को उतनी बुरी नजर से देखा नहीं गया। लेकिन वुमेन के जरिए से ही वुमेन सबसे पहले वायलेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि जो पैदा होने वाला जो बॉय है उसको इसके साथ परसीव किया जाता है गोया के तुम्हारे वजह से ही हमारी
ऊंची शान है और हमारी पहचान है। तो ये जो अहम बात है कि वुमेन को कहाँ से अगर रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमारी सोच से ही रिफॉर्म होगा, तभी जाकर हम रिफॉर्म कर सकते हैं। चैलेंज में अगर बात है तो ये बात बहुत अहम है कि अभी जो है मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे केसेस हैं। जैसे कि बात आती है कि इंडिया में बहुत सारे केसेस पहले के मुकाबले में अब जो है दर्ज हो रहे हैं, कितने सारे लिखाए जा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है। उसके बावजूद यूपी, बिहार और झारखंड का जो रेशो है वो 0.5 है। क्या वहां पर 0.5 केसेस वायलेंस, रेप और वर्कफोर्स कल्चर के हैं? तो पता ये चला कि ऐसा नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में वहां बाधाएं हैं, वहां पर रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, या समाज में मुंह छुपाकर वो बैठ जाते हैं, जो सफरर हैं वो दिखाना नहीं चाहते फेस, या फिर ये होता है कि जो मुजरिम है वो उसका की FIR दर्ज नहीं की जाती है। इतना स्मूथ ये फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। स्मूथ फंक्शनिंग ना होने में जो कल्चर है वो हमारा ना सिर्फ रिश्वत कल्चर है, उसके अलावा रूलिंग पार्टी का अगर कोई उसमें रेपिस्ट है तो वो फिर डिसमिस हो जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। और फिर इवन दो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में, जैसे कि मैंने अभी कहा कि थॉमसन रॉजर्स की एक बहुत बड़ी रिसर्च है, ये बात उन्होंने लिखी है कि गोइंग टू बैग भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा देती है, हाई कोर्ट सजा देती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको बेल हो जाती है। बेल इतनी आसानी से मिल जाती है कि बेल हासिल करने के बाद जो है मुजरिम की हिम्मत बढ़ जाती है, और फिर वो समझता है कि हम रूलिंग पार्टी का हमें सपोर्ट है। तो इसको जो है इस तरह के केसेस को बहुत सारे पॉलिटिकली इस केसेस को सपोर्ट मिल जाता है। वहां पर ये नहीं देखा जाता कि सफरर जो है वो ह्यूमन बीइंग है, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, कास्ट, क्रीड और किसी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बगैर वो वुमेन है और उसके साथ सपोर्ट होना चाहिए। ये माइंडसेट किसी मैन का, यानी कि अगर वो रूलिंग पार्टी का भी हो या फिर वो कोई बड़ी पोस्ट पर, बड़े ओहदे पर हो, बड़े स्टेटस पर हो, उसके बावजूद वो उसको ये शिक्षा ही पहले से नहीं मिली है। जैसा कि मैडम ने कहा था अभी हमारे पास ज्योत्सना मैडम ने, कि हमारे समाज में इंजेक्ट किया जाता है पैदाइश के बाद से ही बच्चियों को कि ये मेल डोमिनेशन समाज है। तो ये चीज हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा वजह टाइमली केसेस जो है हमारे पास सॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पहले की गई थी, जब हमारे पास जो है दिल्ली बस रेप केस था, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई थी। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितने केसेस को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा रहा है। आपने अभी जो जिक्र किया है यहाँ पर बिल्किस बानो का, तो आप खुद देखिए कि बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे उसका को वेलकम करने वाली एक वुमेन थी। तो यहाँ पर जो हमारे समाज का जो माइंडसेट है, हेटरेट फीलिंग है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, या मतलब कास्ट और क्रीड का जो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा प्राचीन से चला आ रहा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं दिमागों में चिपका हुआ है। वो ये नहीं समझता कि कोई औरत जो है वो सिर्फ एक वुमेन है, उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर क्या बीत रही है, इसके इन चीजों पे देखा नहीं जाता। उसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की जब बात की जाती है तो वुमेन्स के लिए सबसे सेफ साइड था साइबर पर वो अपनी बात आवाज उठा सके, क्योंकि उसको अपनी वॉइस का पूरा राइट्स है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं साइबर बुलिंग में सुल्ली डील और बुल्ली बाई को कोई नहीं भुला सकता, कि जहाँ मतलब रिस्पेक्टेड वुमेन्स के साथ में इंतहाई बदतमीजी के साथ बहुत उनके साथ उनको जो उनकी गरिमा है उसको नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये हम देख रहे हैं। उसी के साथ सोसाइटी का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के खिलाफ हर एक वुमेन को एक आवाज बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात हमारे मैडम ने कही है, शल्वी मैडम ने ये बात कही है कि फाइट टुगेदर, हम खवातीन को, हम लेडीज को, हम वुमेन्स को एक आवाज बनना पड़ेगा। इसमें आवाज उठानी होगी और हर एक को उठानी होगी, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उठानी होगी, सिर्फ इस बात के लिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसको जो है इक्वल राइट्स है, और एक वुमेन है उसका एक बहुत रेस्पेक्टिव कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को किसी ने भी डैमेज किया, चाहे वो एक गांव के लेवल पर भी हो, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है और बहुत शेम की बात है। इसी के साथ जो सबसे अहम चीज है वो लेक ऑफ प्रायोरिटी है, जो हम लोग, हमारे पास बहुत सारे ऐसे, जैसा कि हमारे मतलब मिस्टर मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने स्टार्टिंग में ये बात कही थी जब उनका स्टार्ट इन 2014 में कि वुमेन्स को राइट्स दिए जाएंगे इंडिया में, और बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कितना प्रायोरिटी दी गई है
बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हेटरेट फीलिंग को या हेट स्पीच को सपोर्ट किया गया, या फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे केसेस में ये बताया गया कि मुसलमान लेडीज को भी सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं था, बल्कि आप ट्रिपल तलाक के हवाले से या हिजाब राइट्स से अभी हमारी सिस्टर सुमैया रोशन ने कहा कि कितनी सारी लड़कियों ने एजुकेशन छोड़ दिया। अब आप बताएं कि ये कोई राइट्स नहीं है, यानी कि चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट्स को भी भूल जाएं और फिर हम ये समझने लगे कि हमारी जो चीजें हो रही हैं ये हमारी वजह से हो रही हैं, हमको अगर पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना है, सिस्टम को पूरों को दुरुस्त वे में लाना है, तो न सिर्फ समाज का माइंडसेट बदलना होगा, वुमेन का रिस्पेक्ट करने के लिए एक माँ खुद बचपन से गोद में पल रहे बेटे को भी ये सिखाए कि वो कैसे औरत का रिस्पेक्ट करे। उसी के साथ साथ जो बहुत सारे फ्लॉस हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, हमारे कानून में, हमारे पास पुलिस में, जैसा कि एक मिसाल मैं अभी दूंगी कि महाराष्ट्र में उन्होंने एक टोल फ्री दिया है लेडीज को कि अगर कोई आपको मतलब कोई मोलेस्टेट करता है तो फौरन कॉल करें और आ जाएं, और बहुत एक्टिव अभी तो वो स्टार्ट हुआ है और बहुत एक्टिव मूड में हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा कि संशोधन के जरिए, रिसर्च के जरिए से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं, उसके लिए मुतवज्जे करें, आवाज उठाएं। उसी के साथ बहुत अहम बात थी यहाँ पर कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसके बावजूद फ्री एंड एजुकेशन का कंपलसरी एजुकेशन में हम ऐसे हिली एरियाज, वेगाबॉन्ड सिटीज उसमें और एरियाज में, कम्युनिटी में, वेगाबॉन्ड कम्युनिटीज में, हिली एरियाज में, अर्बन एरियाज में लड़कियों को बहुत जल्दी शादी होते हुए देख रहे हैं। मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि बहुत सारे इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं उनके एजुकेशन में, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। स्कूल वहां गांव में मौजूद नहीं है तो वो रेल के, ट्रेन के सफर करके बहुत दूर तक स्कूल में आती है हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए 18 साल से पहले वो एजुकेशन छोड़ देती हैं। दूसरी वाली बात कि इनकी इज्जत महफूज नहीं है क्योंकि सेफ्टी इश्यूज और सिक्योरिटी के इश्यूज इंडिया में है, तो कोई भी माँ बाप सोचते हैं कि इनके साथ सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे इसलिए इनकी पहले शादी कर दी जाए। उसके अलावा मिड डे मील स्टार्ट किया गया था कि बच्चे जो है स्कूलिंग एजुकेशन अप टू 14 वो अपने इसलिए आसानी से हासिल करें, लेकिन वो मिड डे मील भी हमारे पास कहीं ना कहीं ब्राइब का शिकार हो जाता है। गांव एरियाज में उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। उस सिस्टम को चेकआउट करने के लिए, चेक पोस्ट करने के लिए अब भी कोई निजाम हमारे पास सिस्टम नहीं है। फोर्थ वन ये कि जो स्टूडेंट्स वहां पर मतलब जो स्टूडेंट्स वहां एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती हैं, उनको चाहिए कि वो अपने एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन के लिए उनको सहूलत दें और हम उसके लिए फाइट करें। अब अपॉर्चुनिटीज पर आ जाए कि सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम है, हमारे पास एनजीओज हैं, लेडीज एनजीओज हैं जो जाकर स्लम एरियाज में, हिली एरियाज में, वेगाबाउंड कम्युनिटी के अंदर जाकर काम कर सकती हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती हैं। दूसरे जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए अगर कोई वुमेन के साथ कोई सलूक होता है तो हर एक पूरी वॉइस बन जाए और पूरी वुमेन इंडिया में अपना प्रेशर बनाए, क्योंकि प्रेशर बनाने से ही आप आपके राइट्स ले सकते हैं। एक आग जो दूसरे के घर में आज लगी है कल आपके साथ लग सकती है, आपके घर आ सकती है, इसलिए आग को बुझाने के लिए हर एक को पानी लेकर दौड़ना होगा। सेकंड वाला चाहिए कि फोकस्ड एरियाज में जब भी कोई चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स हो या फिर कोई हेट स्पीच हो, रिलीजियस ओरिएंटेड स्पीचेस हो या कोई ऐसे इश्यूज हो, तो वहां सबसे पहले हमारा इशू हो कि हम वुमेन सिक्योरिटी इंडिया में इंश्योर करना चाहते हैं, ये हमारी तरफ से हो। मेरा टाइम खत्म हो रहा है। हेट स्पीच के बजाय हमको इन सब चीजों पे करना चाहिए। उसी के अलावा उसी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप और प्रोस्टिट्यूशन लाइसेंस, इन दोनों को के में बहुत ज्यादा चांसेस है, जस्ट 1 मिनट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वुमेन वायलेंस होता है। वुमेन्स वायलेंस के ज्यादा चांसेस लिव इन रिलेशनशिप पर है, तो हमको लिव इन रिलेशनशिप में, क्योंकि एक लेडी की लाइफ सिक्योर नहीं होती है, उस पर सोशल प्रेशर नहीं बनता है, वो आदमी पर जो उसके साथ वो रहती है इसके साथ वो बदसलूकी कर सकता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार बना सकता है, उसकी ट्रैफिकिंग हो सकती है। तो ऐसे इश्यूज पर भी हमको, जहां बहुत ज्यादा चांसेस है वायलेंस के वुमेन के, हमको उसको रोकने के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रोस्टिट्यूट लाइसेंस के लिए भी कि वहां पर मॉलेस्टेट करने पर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता, कोई उसके मर्डर करने पर भी पुरसाने हाल नहीं होता। ऐसे सारे सेक्टर्स जहां हमको बहुत आजादी दी जा रही है,
अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग भी दी जा रही है तो हमको एक आवाज बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चांसेस ज्यादा है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये जो पैनल है, जो डिस्कशन है, इस पैनल डिस्कशन और आगे बढ़े, वुमेन्स में बेदारी हो और हम तमाम मिलकर जो है इसके खिलाफ लड़ें, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इशू वुमेन सिक्योरिटी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। Jazakallah khairan kaseera, Dr. Khalid Mubashshira, for the appreciated views. Now I would like to call upon Dr. Fakhra Tabassum, Sister Fakhra Tabassum, for the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good evening everyone. मैं अपनी आदरणीय नेशनल सेक्रेटरी रहमतुन्निसा मैम और आपके एडवाइजरी कमेटी मेंबर वुमेन्स विंग JIH की ओर का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी इस टीम ने हर 3 माह में एक बर्निंग इश्यू पर, एक टॉपिक पर आप हमेशा हर 3 महीने में एक नए ढंग से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और ये आपके मेंबर्स मिलकर के इसको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। उसी की आज एक नई कड़ी थी हमारी, जिसमें हम सब ने हिस्सा लिया और बहुत ही मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से, मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पूरी तरह से चल सका। और इसके साथ ही मैं तिलावत कुरान के लिए निदा कासिया को जज़ाकल्लाह खैर कहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड, होली बुक ऑफ कुरान से इन्होंने इस सभा का शुभारंभ किया। अब मैं समस्त जमात इस्लामी हिंद महिला विंग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना बेन यौगनिक जी को, डॉक्टर सेल्वी गणेश जी को, सिस्टर सुनीता जी को, डॉक्टर सितारा जी और हमारी संध्या शैली जी और एडवोकेट सुमैया रोशन जी कि आप सबकी गरिमामय उपस्थिति ने इस सभा को साकार किया और आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला एवं अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए। इसके साथ ही मैं हमारी मॉडरेटर समीना अफशा साहिबा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस सभा को चलाया, इसको मॉडरेट किया इन्होंने। और खान मुबशिरा फिरदौस ने जिस तरह से अपनी बहुत ही कीमती बातें, उन्होंने जिस तरह से इश्यूज के ऊपर दोबारा से रोशनी डाली और अपना कंक्लूडिंग एड्रेस के जरिए इस सभा का खत्म किया इस सभा को। और इस प्रोग्राम की कन्वीनर हमारी साजिदा फलाही साहिबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को अपनी निगरानी में इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया और सारे ही लोगों को इस तरह से जोड़ करके रखा। और आखिरी में इस प्रोग्राम का मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट हमारे ऑडियंस, आप सबका भी दिल के गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा जो है इसके दूररस नताइज हमारे सामने आए और जिन पॉइंट्स पर आज हमारी बात हुई है उस पर दोबारा भी हम सब मिल बैठे और इस प्रोग्राम को और ज्यादा आगे